Do you say that or not? तो सभी बोलते हैं ना? If somebody asks you, why do you come to the school? So you always respond, we come here to study. What is your response? We come here to study. That's really very nice that you all come here to study. But if you really come here to study, then you should all study. आप अगर स्टडी करने के लिए यहाँ पर आते हैं तो स्टडी करना भी चाहिए. Yes or no? Yes. When you say yes, when you say yes to your teacher, you should always say yes ma'am or yes sir. Not just yes. Right? So what should you say? Yes sir. I appreciate that. Good. So you all come here to study. Then why is it so that as and when any question is asked based on the textbook, that question is never answered? It has never happened that I keep somebody's textbook in my hand and based on that a simple question is raised and the child answers that question beautifully well. It has never happened. This has to happen. ऐसा होना चाहिए और आप सबको ये सब करना होगा. क्या करना होगा? कि if you come here to study, then whatever is communicated in the class, that should be very well known to all of you. तो सबको पता होना चाहिए. उसके लिए this is very important that your presence in the class is responsible presence. What kind of presence? In one voice, the answer should be there. What kind of presence? Responsible presence. And when we say that your presence in the class is responsible presence, then that presence has to be focused presence. What kind of presence? Focused presence. What kind of presence? Focused presence. Focused presence. And if your presence is really focused in the class, that means if your teacher is writing something on the board, you are to read in a focused manner. How are you supposed to read? How are you supposed to read? In a focused manner. Whatever your teacher is writing on the board, whatever your teacher is dictating, whatever your teacher is speaking, that you need to write in your classwork notebook in a focused manner. How should you write everything in the classwork notebook? In a focused manner. But if suppose teacher is dictating and you are not even writing, can that be appreciated? क्या उसको appreciate किया जा सकता है? Certainly not. इतनी दूर से आना, बसेस में बैठकर फॉगी वेदर में, खराब मौसम में, और ये कहना कि हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं और टीचर क्लास में डिक्टेट करवा रहे हैं, उसको फोकस्ड वे से लिखा नहीं जा रहा, कॉपी पे नोट नहीं किया जा रहा, बुक पे अंडरलाइन नहीं किया जा रहा. दिस इज नॉट फोकस्ड प्रेजेंस. This is not responsible way to study. This is not responsible presence. And this is not high quality work. And this is not the way to study. जब आप कहते हैं we come here to study, then focused reading and focused writing is very important. What is important? Focused reading and focused writing. What is important? Focused reading and focused writing. Is it really something very difficult? Is it really something difficult? So if it is not difficult and it is highly rewarding, इससे फायदा तो बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा? Focused reading and focused writing. फायदा
बहुत ज्यादा होगा। तो उस बहुत ज्यादा फायदा के लिए ये अगर फोकस्ड रीडिंग और फोकस्ड राइटिंग क्लास में करना शुरू कर दें, व्हाट इज बैड इन दिस एंड व्हाट इज डिफिकल्ट इन दिस एंड व्हाई इज इट नॉट डन? यू हैव टू बी ऑन वन मिशन। एक मिशन होना चाहिए हर एक बच्चे का, और वो मिशन क्या? वट एवर इज टॉट इन द क्लास दैट आई मस्ट अंडरस्टैंड। Whatever is taught in the class, that what should you do? Understand. You should understand. And usually what happens? You not only miss everything that is taught in the class, you don't even know what to talk of understanding. Understand करना तो बहुत दूर की बात, आपको पता ही नहीं होता कि क्लास में हुआ क्या, चैप्टर का नाम नहीं पता होता। And this is highly disappointing. This is very painful. The children are sitting in the class and they don't even know the name of the chapter that is being taught in the class. Something very painful. Whatever are the main points, those points must be on your tips. What should be on your tips? What should be on your tips? All main points of the chapter being taught in the class. What should be on your tips? इधर क्या है? What should be on your tips? All main points. What should be on your tips? All main points should be on your tips, and that can be possible with focused listening. How can that be possible? With focused listening. So if focused reading is important, focused writing is important, then focused listening is also extremely important. What kind of listening? What kind of listening? Focused listening. Very important. So focused listening, focused reading, focused writing. Very important. When you come from such far off places, some of you are coming from the border. There is one border which is almost 15 kilometers away from here. From that place also, so many of you are coming. A border which is a Rania border. Now I remember. Rania border. Very far from here. वहां से भी बच्चे आते हैं, चुगावा से बच्चे आते हैं, इतनी दूर दूर से बच्चे आते हैं, लेकिन बिना तैयारी के आते हैं। Coming to the school is not purposeful arrival at the school, rather we come to the school just because it is a ritual, एक रस्म है। It is daytime, we have to pick our bag and we have to come to the school. Don't make your presence in the school ritualistic presence. इसको रस्मी प्रक्रिया मत बनाएं। स्कूल में आ रहे हैं, सीखने के लिए आ रहे हैं, बनने के लिए आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, अच्छी हैबिट्स के लिए आ रहे हैं, अच्छी भाषा के लिए आ रहे हैं, अच्छी नॉलेज के लिए आ रहे हैं, अच्छी जिंदगी के लिए आ रहे हैं। ये सब कुछ करने के लिए स्कूल है, और बिना तैयारी के आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। इवन बैग इज नॉट प्रॉपरली पैक्ड। बैग ही प्रॉपरली पैक नहीं होता है। तो अगर हमारा बैग ही प्रॉपरली पैक नहीं है, उसमें पेंसिल नहीं है, उसमें पेन नहीं है, उसमें नोटबुक क्लासवर्क नोटबुक नहीं है, उसमें होमवर्क नोटबुक नहीं है, उसमें टेक्स्ट नोटबुक टेक्स्ट बुक नहीं है, दैट मीन्स we have not come to the classroom with proper preparation. तो अगर हमें क्लासरूम प्रेजेंस को रिस्पॉन्सिबल प्रेजेंस बनाना है, और अगर वाकई में स्कूल आने का मकसद स्टडी करना है, then bag should be properly packed. Just in the morning, I saw in one class that the teacher had told the children to underline something, and there were so many children in the class who didn't even have a pencil with them. पेंसिल ही नहीं। टीचर सेज प्लीज अंडरलाइन विद पेंसिल, बट वी डोंट हैव पेंसिल।
So how is learning possible? How is understanding possible? How is proper preparation in the class possible? I don't think so. That the purpose for which all of you are coming to the school, that purpose you will be able to achieve if your bag is not properly packed. तो बैग को प्रॉपरली पैक करना, is it really something very difficult? Is it really something very difficult? No, sir. So if it is not something difficult, then why don't we pick up and why don't we absorb this very simple habit? That when we come to the school, we should come with thorough preparation, and the first thing which we have to do is that we have to pack our bag properly. So बैग को प्रॉपरली पैक करके स्कूल में आना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगली बात, जैसे हमने कहा कि हमें स्कूल में आना है तो तैयारी के साथ आना है. कैसे आना है? कैसे आना है? तैयारी के साथ. तो हमारा जो क्लास में आज वर्क होना है कि वो होना चाहिए हमारे पास कि नहीं होना चाहिए. अब टीचर्स हमेशा क्या करते हैं कि उन्होंने जो आज आपको पढ़ाना है वो पढ़ाने से पहले दे कंडक्ट वन शॉर्ट सेशन ऑफ रिकैपिचुलेशन. विच सेशन? रिकैपिचुलेशन सेशन. विच सेशन? Recapitulation session. Recapitulation session means that the work which was done the previous day, they assess whether that work is known to you or not. हर रोज कितने ही बच्चों के नाम हमारे पास आते हैं कि these are non-responding children. What kind of children? Non-responding child कौन है? जिसने क्लास में ध्यान नहीं दिया और घर जाके भी ध्यान नहीं दिया. मतलब two mistakes. क्लास में भी ध्यान नहीं दिया और घर जाके भी ध्यान नहीं दिया. That child is known as non-responding child. And that child is coming from a far off place, and that child comes to the school and says, I come here to study. Who's going to believe that? इस पे कौन भरोसा करेगा कि यहां पे भी ध्यान नहीं दिया और घर जाके भी कुछ रिवाइज नहीं किया, बिना रिवाइज किए हम स्कूल में आ गए. That kind of child is prepared child. इसको हम prepared बच्चा कहेंगे, वो तैयारी के साथ आया है. Yes or no? So बिना तैयारी के जो बच्चा स्कूल में आया है उसको सीखने का क्या अधिकार है जिसकी तैयारी ही नहीं. So preparation is very important. When you go home, pack your bag properly. When you go home, it is very important that the work which is done in the class, it should be revised. What should we do? We should revise. And when we come to the class, we should not ever be labeled as non-responding child. किस प्रकार से लेबल नहीं होना? किस प्रकार से लेबल नहीं होना? किसी बच्चे को अपने नाम के साथ ये नहीं लगाना कि I am a non-responding child. Non-responding child is unprepared child, irresponsible child, lazy child, casual child, carefree child, careless child. तो हमें किसी भी हालत में केयरलेस, केयरफ्री, कैजुअल, लेजी नहीं होना. ये छोटी छोटी बातें हैं. अगर आप सभी इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो एज ए स्टूडेंट एकेडमिकली आप बहुत अच्छा करेंगे. जो आपके इम्तिहान होंगे उन इम्तिहानों में आप सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. आपके क्लासरूम में आपका कंडक्ट कभी भी खराब नहीं होगा और जो लर्निंग लेवल होगा वो ऑप्टिमम होगा, बहुत हाई होगा. और वही आप सबका मकसद है. जिस दिन आप बहुत ज्यादा सीख कर यहाँ से जाएंगे, जो कि तब संभव होगा अगर आपकी फोकस्ड लिसनिंग है, फोकस्ड रीडिंग है, फोकस्ड राइटिंग है. तो अगर आप पूरी इस तरह से यहाँ से जाएंगे तो आपके मन में भी तसल्ली रहेगी कि हमने स्कूल में 6 घंटे जो बिताए उसका हमने बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया. तो क्या बहुत बढ़िया इस्तेमाल करना है? करना है? वो क्लासरूम के अंदर हो सकता है या वॉशरूम में हो सकता है. So I hope
कि ये जो बच्चों का एक हैबिट है कि whenever bell goes, they rush for washroom. Okay? They will check themselves. They will be fully focused while listening, while reading, while writing. They will come to the classroom. They will come to the school with properly packed bag, and they will come to the school with thorough preparation, with thorough revision.